हेलो फोर्थ ईयर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था थेराप्यूटिक्स, फार्मा थेराप्यूटिक्स इन ऑब्स्टेटिक, in which we studied so many drugs, not so many drugs, we started only oxytocin. Today we'll see two more drugs apart from the oxytocin. So after the all mode of action indications, there is a nursing management of insertion or administration of oxytocin. What should, as a nurse, what should keep in mind while administering the medication oxytocin? Okay, so what should we follow as a nursing responsibilities? Okay, let's see. First is assessment of a client. First of all, we need to see which client is needed. Obviously 5 rights we all know. Okay, there is no need of any explanation. Okay, right dose, do not leave patient alone. Obviously, why this line? कोई लाइन ऐसा है जहाँ मुझे लगता है आप लोग को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, दैट आई एम गिविंग, बट दिस टू इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं. डू नॉट लीव पेशेंट अलॉन. इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द ऑक्सीटोसिन व्हाट डज, the function of oxytocin is it increase the it generate the muscles contraction and relaxation. Okay, ऑक्सीटोसिन का अगर डोज हमने दिया है और सडनली मदर का ऑलरेडी पेन इंक्रीजेज है और फटाफट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इट कैन डैमेज दी मसल समवेयर. फीटस कैन बी इन फीटल डिस्ट्रेस. अगर एक्सेस हो गया तो इसलिए पेशेंट को अलोन नहीं रखना है. यू शुड बी देयर always while administering the oxytocin. Okay, check uterine response every 15 to 30 minutes. We'll see the uterine activity, whether it is responding of oxytocin or not. Check the fetal heart rate every 15 to 30 minutes. Every 15 to 30 minutes we'll check the FHS. Why? Because if there is a excess uterine contraction, relaxation will be, अगर कहीं ज़्यादा हो रहा है तो फीटस विल बी इन दी डिस्ट्रेस्ड. अगर फीटल डिस्ट्रेस हमको कैसे पता चलेगा? बाई कैलकुलेटिंग, बाई ऑब्जर्विंग दी FHS. अगर FHS इज फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो इट इंडिकेट दैट फीटस इज इन क्वाइट डिस्ट्रेस. ओके, और फीटल, वाई विल फीटस विल बी इन डिस्ट्रेस? बिकॉज ऑफ एक्सेस और एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, चेक मदर्स ब्लड प्रेशर. मदर्स ब्लड प्रेशर ऑल्सो कैन बी फ्लक्चुएट. ओके, यूरिनरी आउटपुट, चेक प्रोग्रेस ऑफ लेबर. यूरिनरी आउटपुट विल बी लेस देन more than the 20 ml per minute. Check progress of labor. Definitely, why we are checking the progress of labor? Because of excess uterine contraction and relaxation. It should be होना चाहिए, मीन्स प्रोग्रेस होना चाहिए लेबर में. अगर प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन मिल रहा है और उसके बाद भी लेबर प्रोसेस ग्रो नहीं कर रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो देर इज़ एबनॉर्मेलिटीज. समझ में आया? इसलिए वी नीड टू चेक फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर. ये प्रोग्रेस होना चाहिए इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीटोसिन देन. ओके, अगर नहीं हो रहा है तो वी शुड अंडरस्टैंड, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देर इज़ ए problem in normal delivery. Okay, so these are the next is indications to stop infusion. What is the period in which condition we should stop the infusion of oxytocin? See, abnormal uterine contraction. If mother is getting abnormal uterine contraction, like जिस फ्रिक्वेंसी में हम लोग जब आप लोग वो पढ़े होगे ना नॉर्मल लेबर, इन दैट कंडीशन आपने ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशंस आपने सब पढ़ा होगा, तो यू नो द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशंस. ओके, अभी मैं लास्ट यूनिट डील कर रही हूँ. इस यूनिट में आपको मुझे प्रीवियस एक भी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको हर यूनिट का हर चीज़ पढ़ाया जा चुका है. हियर आई विल एक्सप्लेन यू द एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली जितना कॉन्ट्रैक्शंस है इंटेंसिटी में वो पहुंच रहे हैं. ठीक है, इफ़ देयर इज़ ए एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन विल बी एबनॉर्मल. और हो सकता है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो और ड्यूरेशन बहुत कम हो, तो this is called the abnormal uterine contractions. Okay, fetal distress. If fetus is in distress, then immediately you have to stop the infusion of oxytocin. Maternal exhaustion. If mother is exhausted
देन शी कांट बी कोऑपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसलिए उसको मदर को एग्जॉस्ट नहीं कर रहा है हमको। इफ़ मदर इज़ एग्जॉस्टिंग, जस्ट स्टॉप द इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ओके। क्योंकि मदर का अलर्ट होना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर एग्जॉस्ट होकर अगर अनकॉन्शियस हो गई तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन फॉर बेबी एज वेल एज फॉर मदर, ओके। Next is contraindication. What should, in which condition this oxytocin is contraindicated? Let's see. Grand multipara. In the condition of grand multipara, if a woman is having more than 5, 6, 7 babies, in this condition already there is a sufficient space to come out the baby from the cervix, so it is not needed to insert the oxytocin। और अगर in this situation we provide the oxytocin तो बेबी बहुत ऐसे फ्लो में आ जाएगा कि मीन्स अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। अगर सोचो ऑलरेडी हाउ आई टीच यू, सी इन द केस ऑफ बैलून, बैलून का जो स्पेस है जो जहाँ से एयर आउट होता है, दैट स्पेस, दैट होल इज़ वेरी स्मॉल, ओके। इन द ग्रैंड मल्टीपैरा that hole is very large। if you provide the oxytocin, then all the muscles will get contracted and relaxation। in this condition baby बहुत easily, और easily नहीं कह सकती मैं, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। तो it is not good, okay। So contracted pelvis, in the case of CPD you can't give the oxytocin because pelvis is already contracted and you are providing the oxytocin, what will happen, completely fetus and mother will be exhausted and fetal will come in the distress because fetus नीचे नहीं आ पाएगा because of contracted pelvis। तो क्या होगा, you just imagine अगर सामने कुछ ब्लॉक, ये this is a normal pathway, ओके, एंड देयर इज़ ए ऑब्स्ट्रक्शन और दिस इज़ बेबी। आप कितना भी बेबी को यहाँ कॉन्ट्रैक्शंस में, जब बेबी नीचे जा ही नहीं सकता है तो वो यहीं पे घुट जाएगा, ठीक है, मतलब यहीं पे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। So in the previous LSCS, in the case of previous LSCS will continue to, women for LSCS will not give any oxytocin to go for normal delivery because sometimes in some women's because oxytocin, what oxytocin work, it give the muscles contract and relax। sometimes this LSCA seizures can be damaged because of excess oxytocin, okay। Malpresentation, in case of if baby is in like transverse position, okay, this is mother's uterus, baby is in transverse lie or presentation, how baby will come out, मतलब oxytocin we are providing a woman to deliver the baby और टू कॉन्ट्रैक्ट दी मसल्स, ओके। इन दिस कंडीशन आप उसको ऑक्सीटोसिन दे दिए तो क्या बेबी बाहर आ पाएगा, देयर इज नो नीड टू गिव इन दिस सिचुएशन ऑक्सीटोसिन, ओके। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब लेबर इज ऑब्स्ट्रक्टेड, समथिंग इज देयर लाइक प्लेसेंटा प्रीविया। इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया यू कांट गिव, भले इसमें नहीं लिखा है बट यू मेंशन दिस, इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया वी कांट गिव द ऑक्सीटोसिन, व्हाई, if you provide the oxytocin in the case of placenta previa, placenta will come out first, okay। और मैंने हमेशा से बताया placenta अगर पहले आ गया तो there is a huge amount of loss of blood will be there, baby बाहर आ ही नहीं पाएगा, mother can go to the shock, ठीक है। इसलिए in this situation we never give the oxytocin। और in the case of obstructed liver, if there is any tumor, any fibroid is there, तो it is not possible to do the normal delivery, fine। so in this situation we can't give the oxytocin। next in the obstructing labor, hypovolemic state, in already mother is in hypovolemic condition, if you give the oxytocin, how mother will adjust with this contraction and relaxation, she can't cooperate or she can't adjust, okay। cardiac disease, in the case of cardiac disease also, cardiac disease is a condition in which the muscles will get contracted and relaxation, sometimes there is a chance to have problem in the case of heart, केस ऑफ कार्डियक डिजीज, इसमें हार्ट में भी प्रेशर पड़ सकता है। इफ़ द पेशेंट इज़ इन
कंडीशन ऑफ कार्डियक, किसी किसी वुमेन को होता है कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं. इन दिस टाइप ऑफ वुमेन वी कांट गो टू नॉर्मल डिलीवरी एंड वी कांट प्रोवाइड द ऑक्सीटोसिन. ओके, so this was all about the contraindications. And next is dangers. See, these are the dangers of oxytocin. What dangers a mother feel while in the case of maternal. We'll see the maternal fetal separately. Let's see in the maternal. First is uterine hyperstimulation. What is the function of oxytocin? It is stimulate the muscles of uterus so that uh, it get like contraction and relaxation. Okay, because of this contraction relaxation baby will come out, इसलिए हम लोग provide कर रहे हैं oxytocin. Sometime what will happen, this uterine muscles are get hyper stimulated, and अगर hyper stimulate हो गया है तो excess stimulation will be very dangerous to mother as well as to baby. Uterine rupture, see अगर hyper stimulation हो गया तो it can get यूट्राइन रप्चर, कई बार यूट्रस रप्चर भी होने के चांस रहते हैं. ओके, हाइपोटेंशन, मदर एग्जॉस्ट होने के कारण वो थक जाएगी बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, शी कैन गेट हाइपोटेंशन. एंटीडायोरिसिस, मदर कैन ऑल्सो गेट द एंटीडायोरिसिस, शी विल नॉट फील एनी यूरिनेशन. ओके, this is the dangers of fetus. In the case of fetus, obviously I told you earlier, as fetus can get the distress, fetal distress will be there if we are infusing excess amount of oxytocin, and it will danger to the fetus, and there is a chance to have not only the fetal distress, ultimately it lead to the fetal death और IUD इंट्रायूट्राइन डेथ भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इफ़ देयर इज़ ए फीटल डिस्ट्रेस, fetus will not get the proper heart sound. Okay, or after the exhaustion, after the distress, it will lead to the death of the baby inside the uterus. So these are the dangers of oxytocin. And today we'll discuss these three drugs. Okay, that is that we call the ergot derivatives. And ergot derivatives main function is to stop the bleeding. Oxytocin does, oxytocin's function is to generate the contraction and relaxation of the muscles, uterine muscles. Okay, and it also works as a to stop the bleeding. But the ergot derivatives, their main function is to stop the bleeding as well as to increase the contraction and relaxation. Understanding my words here, I'm not telling the these ergot derivatives generate the relaxation and contraction. I told it increase the contraction and relaxation. Okay, now see the no need to see the chemistry. Let's see the mode of action. What is the action of this ergot derivatives? First we'll see the ergometrin. Let's learn this two drugs. First is ergometrin and next is methargine. These two drugs is this one is oxytocin, methargine, ergometrin or methargine. These three drugs is very very important in the OBG. आपके टंग में होना चाहिए दिस थ्री ड्रग्स. ओके, फर्स्ट विल सी ergometrin. What is the function action of ergometrin? Let's see. It acts directly on the myometrium. See, this ergometrin directly works in the when we infuse this medication, it directly works in the uterus myometrium. It excites the uterine contraction. I told you it excites the contractions which come so frequently one after another. जैसे ही see in this situation what ergometrin do, it increase or it excites the contraction. अगर contraction पहले ऐसे आ रहा है, ठीक है, see the gap, this is the gap. Okay, and now what will be the condition after giving the ergometrin? The how contraction and relaxation will come immediately, fast. Understanding means the duration. See what this is telling, it excites the uterine contraction which comes so frequently one after other with increasing the intensity that the uterus passes into a state of spasm. इन दिस सिचुएशन कभी कभार क्या होता है, यूट्रस जो होता है कम्प्लीटली स्पाज्म हो जाता है विदाउट एनी रिलैक्सेशन इन बिटवीन. सी यहाँ पर दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो रहा है, बट हियर इज़ नो रिलैक्सेशन.
Understanding? So this is a function of, this is the action of ergometrin. Let's see the effective. It should not be used in the induction of abortion or labor. It is highly effective in the hemostasis. Hemostasis के case में it is very very effective in the case of if there is a chance to have the blockage or any difficulties in normal flow of blood. In this situation we provide the ergometrin or methargine. Okay, see the mode of administration, how we infuse the drugs of methargine or ergometrin. Let's see this is the route. Okay, in which route we provide, and this is the ergometrin and this is methargine. How much and how will provide by, if you are infusing by IV, we have to give this 45 to 60 seconds per seconds. Okay, next is 1.5 mils provide करना है if we are providing the methargine. If we are giving IM, give 6 to 7 minutes. If you are giving methargine, 7 minutes only. And if we are giving orally, 10 minutes. Here also methargine will also give in by 10 minutes. Okay, these are the doses. How this doses is very important. Okay, see मैं आप लोग को एक सिखा रही हूँ. Here ergometrin, if you are giving in the ampule, you will provide 0.25 mg per ml. Okay, if you are giving in tablet, वैसे भी tablets बहुत कम दिया जाता है, we provide the ampule only. If you are giving the tablet, give 0.125 mg. Just learn this one, 0.25 mg, because we provide ampule only. In the case of methargine, we provide ampule in 0.2 mg. See, the difference is only, let me change the color. Difference is only here methargine we are giving 0.25 and ergometrin we are giving 0.25, methargine we are giving 0.2 mg. Nothing else to keep in mind. Only the thing is, if we are giving ergometrin, give 0.25 mg and methargine 0.2 mg. That's it. Go forward. Nothing else here. This is the indications. This is the indication how in which condition we provide the this ergot derivatives to a patient. See, in the case of prophylactic, active management of third stage of labor. Only why we are telling about only third stage of labor? Because this ergot derivatives function is to stop the bleeding. It directly work in the myometrium. ओके, मायोमेट्रम पे ही डायरेक्टली वर्क करता है एंड इंक्रीज दी. मैंने लास्ट क्लास में ऑक्सीटोसिन में भी बताया था, वी प्रोवाइड ऑक्सीटोसिन इन द केस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू एक्सपेल आउट दी प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करने के लिए एज वेल एज द बीट्स ऑफ प्लेसेंटा समटाइम्स रिमेन इनसाइड द यूट्रस, उसको रिमूव करने के लिए वी प्रोवाइड दिस मेथार्जिन. एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, जब बेबी आउट हो जाता है तो एक्सेस ब्लीडिंग होती है. इन दिस सिचुएशन वी प्रोवाइड द ergot derivatives टू स्टॉप द ब्लीडिंग. और जब प्लेसेंटा सेपरेशन होता है, ड्यूरिंग दिस सेपरेशन वी आर टेलिंग अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ना, तो जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है, प्लेसेंटा आउट होते से देयर इज़ ए चांस टू गेट मोर ब्लीडिंग और बहुत ब्लड लॉस होने के चांस होते हैं. इसलिए वी प्रोवाइड दिस मेडिकेशन आफ्टर ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ labor. Okay, now in the case of therapeutic, to stop the atonic uterine bleeding following delivery. जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद एटोनिक यूट्रस जो होता है वो बहुत ब्लड लॉस करता है. इन दिस सिचुएशन वी प्रोवाइड दी ergot derivatives. Abortion or expulsion of hereditary form mole. if there is a abortion और hereditary form mole का expulsion हो रहा है, in this situation also we need more contractions. Okay, we need more contraction relaxation as well as to stop the bleeding. For both the things, ergot derivatives are a package for this situation. इसलिए we provide this medication during this time. Okay, so these are the indications. Now let's see the contraindications. These are the contraindications in which we should not give the patient while having this type of problems. Let me see what is the time now. 14:18. Okay, it's okay. Yeah, see, in the case of prophylactic condition, if the patient is suspected pleural pregnancy, agar there is a chance to have the pleural pregnancy, we will never ever give these medications to the fetus. Okay, sorry, to the mother.
In case of cardiac disease, as I said earlier, in case of cardiac disease, we never give severe in the case of preeclampsia and eclampsia, you can also write this on oxytocin also. In the case of oxytocin medication also, we never give medication of oxytocin or ergot derivatives in case of preeclampsia and eclampsia. In this situation, patient is already in the problematic situation like eclampsia, already she is in convulsion and feeds. If we provide the ergot derivatives or oxytocin, it can danger the patient's baby or patient itself, isliye we never provide this medication. Rh negative mother is already suffering from lot of problem of blood related disorders, so we'll never provide this medications while having the Rh problems. In the condition of therapeutic, in the case of heart disease or severe hypertension, in this situation also will never give this medications. Hazards are, these are the hazards. Nausea and vomiting are the problematic situation after giving these ergot derivatives. Rise of BP, gangrene of the toes, there is a chance to have the gangrene on the toes. Interfere with the with lactation. Sometimes this ergot derivatives, if we provide excess in amount or doses, it also interfere in the process of lactation. Okay, so this was all about the ergot derivatives and oxytocin. If there is any doubt in this ergometrin and methargin, let me ask, I'll teach you or very clearly. If there is any queries, please students, you can ask me. In the next class we'll see the prostaglandins. Okay, thank you.